Assalamu alaikum viewers, welcome to Learn Daily Life English. In this series of lesson, you will learn 3 sentences in each day with its Urdu translation. So it become very easy for you to learn English. Subscribe our YouTube channel Usman Hadi consultancy firm and click on bell icon if you continuously want to receive our videos notification. Thank you. Hey guys, hope you are doing great and improving your English day by day. Why not? Because this is a lesson 4 of Learn Daily Life English. But if you have missed our first 3 lectures, nothing to worry. Just go to YouTube, join our YouTube channel Usman Hadi consultancy firm, and you can find first 3 lectures over there. So in this lesson we will again learn 3 more phrases. The first phrase of today is he was once my friend. लाइक आप जो है वो अपने किसी ऐसे दोस्त के बारे में किसी ने आपसे पूछ लिया जो कभी आपका दोस्त था, अब किसी भी वजह से आपका उसका जो है वो मिलना जुलना बातचीत नहीं रही, एंड इफ समबडी आस्किंग अबाउट दैट पर्सन फ्रॉम यू कैन से दैट ही वाज वंस माय फ्रेंड बट नॉट नाउ. ओके. और आज का दूसरा फ्रेज दैट वाज ही कम्स टू मी नाउ एंड देन. नाउ एंड देन जो है ये कभी कभार के मीनिंग में लाइक मोस्टली मैं आपके साथ अगर एक दो सिचुएशन शेयर करूं, आप पुराने जो अपने कोलीग्स होते हैं कभी कभार आप उनके पास वो ससुराल में आ जाती है, और कभी कभार जब मेके जाती है तो अपनी सहेलियों से उसका कभी कभार मिलना होता है. तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर, या आप ऐसी सिचुएशन के अंदर हैं और कोई आपसे आपके उस दोस्त के बारे में, आपकी उस सहेली के बारे में पूछता है, तो यू कैन से दैट ही कम्स टू मी नाउ एंड देन. कभी कभार आता है, आती है, और शी कम्स टू मी नाउ एंड देन, और यू कैन यूज इट एज ए दे कम्स टू मी नाउ एंड देन. इस तरह की सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं. The third phrase of today, that is a very important phrase. ये phrase भी है, नसीहत भी है कि दूसरों में ऐप मत निकालो. Do not find faults with others, or you can say it, don't find fault with others. दूसरों के ऐप जो है वो मत निकालो, दूसरों में जो है वो खामियां मत तलाश करो. Don't find faults with others. Do not find fault with others. So guys, do practice as much as you can do, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इन सेंटेंसेस की, इन फ्रेजेस की, और जितना आप इनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल करेंगे, उतना ही इसका आपको जो है वो रिजल्ट्स मिलेगा, उतना ही आपको फ़ायदा होगा. इफ़ यू are liking our videos, please do share at your Facebook account with your WhatsApp groups, ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सके. हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.